Vanaprastha ashram traveling all over the world, especially Vrindavan, Laguna Beach, South Africa and Bali. And we are extremely fortunate to have them with us today. So, आप सबसे निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें और ध्यानपूर्वक भागवत संदेश को सुनें। हरे कृष्ण। That's what he said that before. We take the phone and switch it off because when you speak, if the people are listening, it makes it easier to speak. So first thing we do is we take the phone, you have an off button, you push the off button. If you have to send a text, you can send it afterwards because it is harder to give class when you hear phones ringing. It disrupts the continuity. So we will translate into Hindi also. Phone switch off. Tell them phone switch off. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अपना अपना फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए क्योंकि जब ध्यानपूर्वक श्रवण होता है तभी वक्ता को बोलने का कोशिश करता है तो इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो सब मोबाइल को बंद करते हैं। We all just try to serve to what ability we can. हम सब सेवा करने का प्रयास करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। My singing voice is not very good, and it is not easy for me to get the meter with the mantra, but I try my best in Krishna's service. मेरी जो आवाज है वो इतनी अच्छी नहीं है, परंतु मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैं ठीक मीटर में सारे कृष्ण मंत्र को गा सकूँ। And that's all we can do is try to do our best in Krishna's service and try to improve. तो हम यही कर सकते हैं, अपना बेस्ट दें कृष्ण की सेवा में और सुधारने का प्रयास करें। So first we will chant the invocation. तो पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करें। Which invocation you want? The first 3 words of the first canto of Srimad Bhagavatam? श्रीमद् भागवतम के पहले 3 श्लोक Or पहले 3 शब्द the first words of the second canto? Check the... That's not the invocation. Do we want the first 4 words of the second canto of Srimad Bhagavatam? या पहले दूसरे स्वर के पहले 4 शब्द Or do we want the mantra that Dhruva Maharaj chanted in the forest? या हम वो मंत्र चाहते हैं जो ध्रुव महाराज ने वन में उच्चारण किया था, अभ्यास किया था। Who said it? You say it? They're all the same. See, you have to have read these to find out. Yes. Okay. So it goes like this. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from which canto? Canto 9, chapter 5, text 27. श्रीमद् भागवतम नमस्कार 5वां अध्याय श्लोक संख्या 27 और 28। Iti etat punyam akshayanam ambarishasa bhupate sankirtayan anudayayan bhakto bhagavato bhavet. Iti etat punya akyayanam ambarishasya bhupate sankirtayan anudayayan bhakto bhagavato bhavet. Iti etat punyam akyayanam ambarishasya bhupate
Sankirtayan Anudayayan Bhakto Bhagavato Bhavet Iti etat punyam akyayan Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudayan Bhakto Bhagavato Bhavet. Repeat. Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudayan Bhakto Bhagavato Bhavet Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudayan Bhakto Bhagavato Bhavet. Ladies, Vaishnavis. Iti, thus. Etat, this. Punyam Akyayanam, most pious activity in history. Ambarishasya, of Maharaj Ambarish. Bhupate, O King. Maharaj Parikshit. Sankirtanayan, by chanting, repeating. Anudayayan, or by meditating upon. Bhakta, a devotee. Bhagavata, of the Supreme Personality of Godhead. Bhavet, one can become. First, I'd like to say how nicely you chant the Sanskrit mantras. Nicely they chant the Sanskrit mantras. You have an advantage because the same alphabet is there for Hindi and for Sanskrit. Some sounds cannot be accommodated with the Roman text, which is used for English. रोमन टेक्स्ट जो है इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करके किया जाता है तो उसमें उसका पहचानना उच्चारण करना मुश्किल होता है. Like my name is actually Kshudi. प्रजी बता रहे हैं जैसे उनका नाम है शुद्धि. But in English it either comes out Kushudi or Shudi. तो अगर इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो आता है कुशुद्धि या शुद्धि. And in Bengali it comes out Kudi. So now we will read the verse. Listen to this attentively. Anyone who chants this narration or even thinks of this narration about the activities of Maharaj Ambarish
certainly becomes a pure devotee of the Lord. जो भी इस कथा को बार-बार पढ़ता है, ये महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। And you want to just read it in Hindi, or should I read it in English first, the purport? Okay. We'll read the purport first in English and then in Hindi. English first, fear Hindi. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur herein gives a very good example. When one is very eager for more and more money, he is not satisfied even when he is a millionaire or a multimillionaire, or today billionaire, but wants to earn more and more money by any means. The same mentality is present in a devotee. The devotee is never satisfied, thinking, this is the limit of my devotional service. The more he engages in the service of the Lord, the more service he wants to give. This is the position of a devotee. Maharaj Ambarish in his family life was certainly a pure devotee, complete in every respect, because his mind and all of his senses were engaged in devotional service. Savai Mana Krishna Padara Vindaya, or Vajamsi Vaikuntha Gunarnavarne Nane. Maharaj Ambarish was self-satisfied because all of his senses were engaged in devotional service. Sarvapadi Vinir Muktam Tat Paradvena Nirmalam Rishikesha Rishikena Sevanam Bhaktir Uchate. Nevertheless, although Maharaj Ambarish had engaged all of his senses in devotional service, he left his home and went to the forest to concentrate his mind fully at the lotus feet of Krishna. Exactly as a mercantile man, even though complete in wealth, tries to earn more and more. This mentality of getting more and more engaged in devotional service puts one in the most exalted position, whereas on the karma platform, the mercantile man who wants more and more money becomes increasingly bound and entangled. The devotee becomes increasingly liberated. यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन के लिए अति लालायित रहता है, तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता। प्रत्युत येन प्रकार और अधिक धन कमाना चाहता है। ऐसे ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त ये सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यही सीमा है। वह भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है, उतना ही अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा जगती है। ये एक भक्त की दशा है। महाराज अम्बरीश अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से शुद्ध भक्त थे, क्योंकि उनका मन तथा उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी रहती थी। सावे मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तने। महाराज अम्बरीश आत्मतुष्ट थे, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी थी। सर्वपादे विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाए रखते हुए भी अपना घर त्याग दिया और अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी और अधिक धन कमाना चाहता है, भक्ति में अधिकाधिक लगे रहने की यही प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लाती है। कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है, वह अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त होता जाता है। Now we'll read text 28. I will just read it. Ambarishasha charitam ye shrinvanti mahatmanaha muktim prayanti te sarve bhakta vishnu prasadataha. Ambarishasa of Maharaj Ambarish. Charitam, character. Ye, persons who. Shrinvanti, here. Maha Atmana, of the great personality, the great devotee.
Muktim, liberation. Prayanti, certainly they attain. Te, such persons. Sarve, all of them. Bhaktya, simply by devotional service. Vishnu, of Lord Vishnu. Prasadada, ta, by mercy. Translation. By the grace of the Lord, those who hear about the activities of Maharaj Ambarish, the great devotee, certainly become liberated or become devotees without delay. भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं, वे तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि को जीवन दान नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। So, hearing about these activities of the great devotee brings someone great joy. इन महान भक्तों के महान कार्यकलापों के श्रवण से महान आनंद उत्पन्न होता है। Look at the benefits here of hearing about Maharaj Ambarish. अम्बरीश महाराज के चरित्र के श्रवण के यहाँ लाभ देखिए। One, they become a pure devotee of the Lord, वो एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा and they become liberated और मुक्त हो जाएगा and become devotees without delay. या तुरंत भक्त बन जाएगा। So why is it everyone is not becoming a devotee without delay? तो ऐसा क्यों होता है कि हर कोई भक्त नहीं बन रहा, तुरंत भक्त नहीं बन रहा, क्यों? It's not rhetorical. What is the answer? Because we do not hear sufficiently. Because they don't, We do not hear sufficiently. or they don't hear at all. We had to start somewhere, right? तो देव सेवा ने उत्तर दिया है कि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं सुन रहे, Especially for या फिर वो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। Especially- शुरुआत करनी होगी। especially for general public, just let them hear something. जैसे जन साधारण के लिए कुछ ना कुछ वो सुने। We think there may be difficulties in getting this Vedic literature. हमें लगता है कि बहुत मुश्किलें होंगी वैदिक साहित्य समझने में। This knowledge is way up there in the spiritual world. ये जो ज्ञान है बहुत ऊपर आध्यात्मिक जगत में है। But in the first verse of Srimad Bhagavatam, तो श्रीमद् भागवत के पहले it श्लोक में says, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadasa Jataha Anarad Itaratas Cha Artesu Vigna Svaratene Brahma Ridaye Adikavaye. This knowledge was imparted into the heart of Brahma. ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ था। So right from the beginning, Krishna gives this knowledge to the first living entity in the universe. सृष्टि की शुरुआत में ही जो सृष्टि के पहले जीव है ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण उनको एक ज्ञान प्रदान करते हैं। And as Krishna says, Evam parampara praptami mam rajarishi vidu. The knowledge is imparted in disciplic succession. और फिर भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है। Comes all the way to Srila Prabhupada. और उसी परंपरा में श्रीला प्रभुपाद ने ग्रहण किया। Srila Prabhupada has spent great effort translating these literatures into English. श्रीला प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है इस महान साहित्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए। He uses the purports of Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Sridhar Swami, and Jiva Goswami. उन्होंने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला श्रीधर स्वामी, उनके तात्पर्यों के आधार पर अपनी तात्पर्य लिखे हैं। Then he combines them with his devotional ecstasies and puts them in print form for us. तो उनके तात्पर्यों को अपने जो भक्ति में रस के जो भाव हैं उसके साथ मिश्रण करके यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। Then, of course, a few hundred years ago, Gutenberg invented the printing press. और कुछ 100 वर्ष पहले गुटेनबर्ग में ये प्रकाशन जो यंत्र है इसका निर्माण किया गया। Look at the advantage of that. और उसका लाभ देखिए। During this marathon, they plan to distribute 250,000 books from Punjabi Bagh. तो मैराथन में
ISKCON पंजाबी मार्ग से 2.5 लाख भगवद गीता वितरित करने का लक्ष्य है and about 400,000 from east of Kailash, और ईस्ट ऑफ कैलाश से 4 लाख गीता and maybe 1.5 million to 2.5 million all over the world. और शायद 15-20 लाख पूरे विश्व से Imagine if we had to write these all by hand. कल्पना कीजिए अगर इतनी सारी पुस्तकें हमें हाथ से लिखनी पड़ती This was the old way, copy meant you copied it. अगर इसको एक-एक पुस्तक बनानी पड़ती कॉपी करके So the knowledge has been translated into all languages. तो ये ज्ञान अनुवाद हो चुका है इसके हर भाषा में Books have been printed. पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं Now all you have to tell yourself अब आपको सिर्फ अपने आप को बताना है is मैं किताब खोल रहा हूँ. कि मैं किताब खोल रहा हूँ I am opening the book. मैं किताब खोल रहा हूँ. Right? मैं किताब खोल रहा हूँ Even the big one is not so heavy, yes? और ये बड़ी पुस्तक भी इतनी भारी नहीं है We see the advantages of associating with these great devotees. तो हम लाभ देखते हैं इतने महान भक्तों के संग का के साथ संग करने का And what an advantage it is to be able to read about them. और उसका क्या लाभ है कि हम इनके बारे में सुन सकें But if we don't read them, it won't do us any good. परंतु अगर हम इनको नहीं पढ़ते तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा हमें They say the problem with Bhagavad-gita ये कहते हैं कि भगवद गीता के साथ समस्या is if people don't read it, कि अगर लोग उसको नहीं पढ़ेंगे they don't find out what happens to the people who don't read it. तो वो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो भगवद गीता नहीं पढ़ते If you are walking on the street and sign says Parishani, hole in the street, अगर आप गली पे जा रहे हैं और वहाँ पर साइन बोर्ड लगा है कि आगे खड्डा है then you get injured. और उसे चोट लगती है Whereas if you had just read the warnings, परंतु अगर आपने चेतावनी पढ़ी है you could save yourself so much trouble. आप अपने साथ इतनी असुविधा को बचा सकते हैं So this is the problem with these books, तो इन पुस्तकों के साथ ये समस्या है is the knowledge and wisdom is there, ज्ञान और इसमें उपस्थित है but if people don't read them, परंतु लोग अगर इन्हें नहीं पढ़े they won't know what's inside them. तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है So look, most of the work has been done. तो देखिए अधिक कार्य हो चुका है Krishna imparted it to Brahma, imparted knowledge to Brahma. Tene Brahma Hridaye. भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया Then knowledge has been imparted in disciplic succession. उसके बाद जो ये ज्ञान है परंपरा में से आ रहा है Srila Prabhupada has translated the books and given us purports. श्रीला प्रभुपाद ने पुस्तकें अनुवाद कर दी हैं तात्पर्य दे दिए हैं The printing press was invented. प्रकाशन जो पूरा प्रिंटिंग प्रेस है उसका भी निर्माण हो गया And the books are printed so they can be available. और पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं ताकि वो उपलब्ध हो We find the people who are the best at distributing books. हम देखते हैं जो सबसे अच्छे पुस्तक वितरण करने वाले भक्त हैं They have two things. उनके पास दो चीजें हैं One, I asked Vaisheshika, I said, people all seem to love you here. एक बार मैंने वैशेषिका प्रभु से पूछा कि यहाँ पर सारे लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं This is because he was distributing books in Vrindavan. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वृंदावन में पुस्तक वितरण कर रहे थे He says, that's because I love them. तो उन्होंने उत्तर दिया ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ So we have to care about other people. तो हमें अन्य लोगों का ध्यान रखना चाहिए But we don't become attached. परंतु हम आसक्त नहीं बनते We are looking for the people who want them, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो उनको चाहते हैं not the people who need them. They all need them. ऐसे लोगों को नहीं जो जिनको उनकी जरूरत है सबको उनकी जरूरत है But if you spend more time with the ones who want them, you will do better at books. परंतु अगर आप अपना ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ चाहेंगे जो उनको चाहते हैं
तो आप पुस्तक वितरण ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। We are distributing them as a benefit for the people. हम उनको एक पुस्तक वितरण कर रहे हैं उनके लाभ के लिए। If they don't want the benefit, we don't become distressed. अगर वो ये लाभ नहीं चाहते तो हम हतोत्साहित नहीं होते। If you go outside to give away 2,000 rupee notes अगर आप बाहर जाएं 2000 रुपए के नोट बांटने के लिए and no one wants them, और कोई भी उन्हें नहीं चाहता, would you feel bad about yourself and the 2,000 rupee notes? तो क्या आप अपने बारे में बुरा सोचेंगे या 2000 नोट के बारे में बुरा सोचेंगे? Or would you think people are missing out? या आप सोचेंगे कि जो लोग हैं कुछ मिस कर रहे हैं? But what is the best way to tell somebody what is in these books? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है लोगों को बताने का कि पुस्तकों में क्या है? Yes? What is the answer? No, what is the best way to tell someone what is in this book? सबसे अच्छा तरीका क्या है लोगों को बताने का? Krishna is the Supreme Personality. No, what is the way? How would you tell some? We can serve Krishna with a love and devotion. No, this is how. But how would you be able to tell somebody something from the book? Yes. It is having your self-interest. It is of Beyond, what is a simple thing? What? you should glorify them first and then tell them that. Yes, but what else? If they ask you what's in the book, by reading it, tell them that. Yes. उनको तभी बता पाएंगे पुस्तकों में क्या है जब आपने खुद पढ़ी हुई है। If you have read this, you share something. I read this and it helped me out. तो अगर आपने पढ़ी हो पुस्तकें तो आप उन्हें बता सकते हैं कि पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और इस चीज ने मेरी सहायता की है, शेयर कर सकते हैं। And we always keep books with us. और ये पुस्तकें हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। Because in India there is many lines or queues. क्योंकि भारत देश में बहुत सारी लाइनें लगती हैं। You know what the difference between a line and a queue is? तो क्या आपको पता है लाइन और क्यू में क्या अंतर होता है? A queue means it's longer. क्यू का अर्थ है कि वो लंबी होती है। They always say here, stand in the queue. तो हमेशा साइन लगा होता है कि हाँ स्टैंड इन द क्यू। That means it's going to take some time. इसका अर्थ है कि कुछ समय लगेगा। But if I have a book to read with me, परंतु अगर मेरे पास पुस्तक है पढ़ने के लिए, if it takes 20 minutes instead of 5 minutes, तो अगर 20 मिनट लगते हैं 5 मिनट की जगह, I get to read for 20 minutes. मैं 20 मिनट के लिए पढ़ सकता हूँ। Sometimes it is hard to keep all the books. कभी-कभार सारी पुस्तकें साथ में रखना मुश्किल होता है। I can actually lift all of Prabhupada's books over my head with one hand. परंतु मैं श्रीला प्रभुपाद की सारी पुस्तकें अपने सिर पर रख सकता हूँ एक हाथ से। Because someone gave me a gift, the Kindle with all of Prabhupada's books inside. क्योंकि किसी ने मुझे ये उपहार दिया था Kindle जिसमें सारी प्रभुपाद की पुस्तकें उपलब्ध हैं। People who know this, they buy one book, they figure out how to download the rest. जिन लोगों को ये पता है तो वो एक पुस्तक लेते हैं और बाकी अपना पता लगा लेते हैं बाकी पुस्तकें कैसे डाउनलोड करनी है। Someone asked me in Vrindavan, maybe we should try to get people to take electronic instead of books. मैं तो व्यक्ति मिला जो वृंदावन में वो कह रहा था कि हमें लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ये गैजेट देने के लिए ज्यादा उत्साहित करना चाहिए पुस्तकों की बजाय। But it is difficult for us to explain how to do this. परंतु हमारे लिए मुश्किल है उन लोगों को ये बताना कि कैसे किया जा सकता है। The people who know how to do this can figure it out without us. और जिन लोगों को पता है वो हमारे सहायता के बिना अपने आप कर सकते हैं। So we concentrate on distributing the books. इसलिए हम अपना ध्यान लगाते हैं पुस्तक वितरण में। And they can figure out how to do. At least it is available to people who want to download them electronically. और जो लोग इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं वो अपने आप पता लगा लेते हैं। But books are good because that you leave it out, many people can read it. और परंतु पुस्तकें ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि अगर आप एक पुस्तक कई सारे लोग पढ़ सकते हैं। Especially most people live in one place. और बहुत सारे लोग एक स्थान पर जो रहते हैं। I live in an airplane. मैं एयरप्लेन में रहता हूँ। I go to some remote place. My daughter lives on the Hindu island of Bali. मेरी जो बेटी है वो हिंदू आइलैंड बाली वहाँ पर रहती है।
And sometimes we go there to one small remote island called Gili Ayer. तो वहाँ पर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एक अलग ही exciting नहीं है. But our real pastimes are there with Krishna in his pastimes. परंतु हमारी असली लीला कृष्ण के साथ है, कृष्ण की लीलाओं में. We're like someone who has amnesia, the disease of forgetfulness. आप उन रोगी की भांति हैं जिसको एमनीजिया बीमारी है, जो हर चीज भूल जाता है. So you go to that person and you tell them what goes on in their real life. तो आप उन लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी असली जिंदगी में क्या चलता है. So that hopefully this will remind them of who they really are. इस उम्मीद से कि उनको ये याद दिलाएगा कि वो वास्तविक में कौन है. So this is the great advantage of being able to associate with Krishna and his devotees through the literature. तो ये महान लाभ है कृष्ण के साथ संग करने का और उनके महान भक्तों के साथ ग्रंथ के माध्यम से. The benefit is so great. ये लाभ इतना महान है. And all we have to say is मैं किताब खोल रहा हूँ. और हमें सिर्फ एक ही ये वाक्य कहना है, मैं किताब खोल रहा हूँ. We see our tendency is whatever we get, we want more of it. और हमारे ये प्रवृत्ति है कि हम जो हमें मिलता है हम उससे और अधिक चाहते हैं. That's why I try to do reading and chanting. इसलिए मैं अध्ययन और जप करने का प्रयास करता हूँ. Because whatever I do, my tendency is to do a lot of it. क्योंकि मेरी प्रकृति है कि मैं जो भी करता हूँ उसको मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ. My grandmother used to say, if it's worth doing it all, it's worth doing well. मेरी दादी कहती थी अगर पूरा करने के ये वर्ड है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए. So we have to associate with Krishna and the great devotees through these literatures. तो हमें कृष्ण और उनके महान भक्तों के साथ संग करना चाहिए ग्रंथ के माध्यम से. We have to think of ways and means for us to increase our attachment to Krishna. और हमें इस पे विचार करना चाहिए, अलग-अलग तरीके ढूंढने चाहिए कि हम इससे आसक्ति बढ़ा सकें. Because no matter how good of devotee we are, we can always improve. क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने ही अच्छे भक्त क्यों ना हो, हम हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं. No matter how bad we are, we can always improve. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बुरे हैं, क्योंकि हम हमेशा सुधर सकते हैं. The point is to improve our Krishna conscious on a daily basis. महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनामृत को हम उसका स्तर है इसको सुधारते रहें प्रतिदिन दैनिक आधार पर. Not just like saying, I am a resident of Delhi. ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली वासी हूँ. But do they try to improve that? क्या वो दिल्ली सुधारने का प्रयास करते हैं? Of course, as part of our devotional service, we can improve that. भक्ति में सेवा में हम सुधारने का प्रयास करते हैं. We can be better people we can be better to the people around us. हम आसपास के जितने लोग हैं उनके साथ हम व्यवहार को और सुधार सकते हैं. So we have to think of ways and means to engage, to get others started in Krishna consciousness. तो हमें ऐसे तौर तरीके ढूंढने चाहिए कि जिससे अन्य लोग की कृष्ण भावनामृत यात्रा प्रारंभ हो सके. And to associate with Krishna and his pure devotees. और कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त के साथ संग प्राप्त कर सकें. But we get people started easy. लोगों का ये यात्रा प्रारंभ करना आसान सरल है. We don't ask them join the temple, we just ask come and visit it. हम ये नहीं कहते कि मंदिर ज्वाइन कर लो, हम उनको बस निमंत्रण देते हैं कि मंदिर आइए. We ask them to read a book हम कहते हैं कि आप पुस्तक पढ़िए and come and ask us questions. और हमसे आके प्रश्न कीजिए. So we think of ways and means to get people interested. तो हम तौर तरीके ढूंढते हैं कि जिससे लोगों की रुचि बढ़े. We tell them, oh, and we have nice quality food there that is called prasadam. हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलता है, जिसको प्रसाद कहते हैं. However we can attract people, that is good. जिस भी माध्यम से हम लोगों को आकर्षित कर सकें वो अच्छा है. But as devotees, we know many people who might rather go to a movie instead. परंतु ऐसे हमारे जानते हैं कि जो लोग हैं वो मूवी देखना ज़्यादा पसंद करें. And then what do we tell them? तो हम उन्हें क्या कहेंगे?
We say, oh, you know what? We are having a movie that starts on December 15th in Delhi. And we ask, yes? हम उन्हें कहेंगे कि आपको पता है कि एक मूवी है जो 15 दिसंबर को लॉन्च हो रही है. You ask the people if they would like to come with you and you book the time ahead. और आप लोगों से पूछिए क्या वो आपके साथ आना चाहेंगे और आप उनकी बुकिंग करा लीजिए. That way they are set to come with you. तो उस प्रकार से ये कार्यक्रम बन जाएगा. This way we can get people interested who may not be interested in something more. तो इस प्रकार से हम उन लोगों की रुचि बढ़ा सकते हैं जो अन्य किसी चीज में रुचि शायद ना हो. We have to start them easy. तो बहुत सरल तरीके से प्रारंभ करना है. Like take some prasad, come see a movie. जैसे कि प्रसाद लीजिए और मूवी आइए. Just like yesterday, some people were looking down the pathway to the brahmachari room in east of Kailash. जैसे कि कल कुछ लोग एक जो रास्ता है ब्रह्मचारी आश्रम जाने का उसकी तरफ देख रहे थे. They looked like they were thinking of going down there. तो ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हो कि हम इस रास्ते से आगे जाना चाहिए. I said, oh, that's brahmachari ashram. You want to become brahmacharis? तो मैंने कहा ओ ये रास्ता ब्रह्मचारी आश्रम की ओर जाता है, क्या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? They said, oh, no. तो कहते हो नहीं. But if I asked them to go see a movie, they might go. परंतु अगर मैं उनसे पूछता है क्या मूवी देखने जाएं? So you can check. You see, sometime after the 15th, you book the time for yourself and try to bring a few other people also, because the movie will introduce them. तो इसलिए आप ये जो तारीख है नोट कर लीजिए 15 दिसंबर और कोई शो इसका बुक कर लीजिए और लोगों को साथ में लाइए क्योंकि इस तरीके से जो मूवी के माध्यम से हरे कृष्ण भावना में इंट्रोड्यूस हो जाएगी. And if they book ahead, that way they will come also. और अगर वो पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं तो आएंगे भी. Because they've already paid ahead of time and the date is set. क्योंकि समय से पहले उन्होंने पेमेंट कर दी है और समय निर्धारित हो चुका है. Plus, it's easier that way. You just walk in and pick up your ticket. You don't stand in a long line to buy one. और ये उससे सरल है कि स्पॉन्टेनियसली वहाँ जाकर टिकट खरीदने से आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. And it probably won't be a line, it'll be a queue. और शायद वो लाइन ना हो क्यू हो. Don't worry, if you miss this queue to stand in, there will be other queues. तो चिंता मत कीजिए अगर आपकी लाइन मिस हो जाए, क्यू मिस हो जाए तो अन्य और क्यूज भी होंगी. You'll have plenty of opportunity to stand in line in other places. तो आपके पास अन्य बहुत सारे अवसर होंगे बसों की लाइन में खड़े होने के. But if you buy ahead, you won't have to do this. परंतु अगर आप पहले से ही खरीद देते हैं तो आपको लाइन में नहीं खड़ा होना. So there are so many advantages in this. तो कितने सारे लाभ हैं देखिए. So we invite people to come to the movie, book the time ahead. तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं इस मूवी के लिए पहले से बुकिंग करा के. We read the book so we can convince others that there is good things in the book. तो हम पुस्तकों को पढ़ते हैं ताकि हम अन्य लोगों को कन्विंस कर सकें कि इस पुस्तक में बहुत अच्छी चीजें हैं. And we ask people to meet us at the temple. और हम लोगों को कहते हैं कि हमें मंदिर में मिलिए. And if we see someone that comes for the first time, और जब हम देखते हैं कि कोई मंदिर पहली बार आया है then we just try to make friends with them. तो हम उनके साथ मित्रता करने का प्रयास करते हैं. You don't try to defeat them in philosophical argument. आप उन्हें दर्शन में पराजित करने का प्रयास नहीं करते. If you can just convince someone to go to the movie or come back to the temple again, अगर आप इतना कन्विंस कर लें किसी को कि मूवी देखने जाएं या मंदिर आएं, that is a good start. We start easy. तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है. हम सरल तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं. Prabhupada says we go in like a needle and come out like a plow. श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि हम सुई की तरह अंदर प्रवेश करते हैं और फावड़े की तरह बाहर आते हैं. So just ask them, come to see the movie with me, come to visit the temple and watch what we do. तो इसलिए आप हमारे साथ आइए मूवी देखने और देखिए हम क्या करते हैं. They don't have to join, they don't have to participate. They don't have to join the first time they come. ऐसा नहीं है कि पहली विजिट में आपको मंदिर ज्वाइन करना है. They don't have to join to go to the movie. और मंदिर ज्वाइन करना आवश्यक नहीं है मूवी देखने के लिए. Just come and watch the movie and come to the temple and watch what we do. तो सिर्फ आइए मूवी देखिए मंदिर आइए और देखिए हम क्या करते हैं.
And especially if someone comes to the temple alone, विशेष रूप से अगर कोई मंदिर अकेले आता है, then you know they are interested. तो आपको पता है कि वो सही में रुचि रखते हैं. Because if people don't even wait for other people to come with them, but come by themselves, it means they are interested to find out. तो अगर वो लोग अन्य लोगों का इंतजार नहीं करते मंदिर आने के लिए, वो खुद ही आ जाते हैं. If they come with a group of 5, 10, 15 people, अगर वो 5, 10, 15 लोगों के साथ आते हैं, they already have friends with them. तो उनके साथ पहले से ही मित्र हैं. But if they come alone and you neglect them, you're missing the best prospect. परंतु अगर वो अकेले आते हैं और आप उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं उनको आप मिस कर रहे हैं. So when they come, we make friends with these people. जब वो आते हैं हम उनके साथ मित्रता करते हैं. And here the movie is a great opportunity. और ये जो मूवी है बहुत अच्छा अवसर है. Because we probably know people who maybe don't want to move in a brahmacharya ashram. क्योंकि हम जानते हैं कि लोग ब्रह्मचारी आश्रम में आना स्वीकार नहीं करते. But they wouldn't be threatened by being asked to go to a movie. परंतु वो मूवी देखने के लिए शायद भयभीत नहीं होंगे. So we start easy. तो हम बहुत सरल तरीके से प्रारंभ करते हैं. And after they see the movie, मूवी देखने के बाद you say, you see why we distribute and study these books? तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब आपको पता चला कि हम क्यों ही पुस्तकें पढ़ते हैं और वितरित करते हैं. This should inspire you to do some reading. वो आपको प्रेरित करेगा इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए. So none of these events are ends in themselves. इनमें से कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है कि अब अपने आप में अंत भी हो गया. The movie leads to books and temple. जो मूवी है, मूवी से बुक्स और मंदिर की ओर रास्ता खुलता जाता है. Temple leads to more chanting. जो मंदिर से रास्ता जाता है ज़्यादा जप का. So they all connect together. जिससे वो सब आपस में कनेक्ट हो सके. So find some people लोगों को ढूंढिए who haven't been so interested to come to the temple, जो मंदिर आने में इतनी रुचि नहीं रखते, but might be interested in seeing the movie about Prabhupada. परंतु वो रुचि रखेंगे मूवी जाने के लिए. Then you find out which days it is going. फिर ढूंढिए कि किन किन दिन ये मूवी लगी है. You don't ask them whether they want to see the movie or not. आप उनसे ये मत पूछिए कि कब वो मूवी देखना चाहते हैं. You say, movie is playing 15, 16, 17, 18. तो आप ये मत पूछिए कि मूवी देखना When? है नहीं देखना. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yes, you say, so which day would be more convenient for you? तो आप उनसे पूछिए कि 15 से 21 दिसंबर तक की मूवी लगी है, तो आप कौन से दिन देखना चाहेंगे. Because the idea is, we don't want them to have the choice whether to go or not. क्योंकि हम उन्हें ये चुनाव नहीं देना चाहते कि आप जाना चाहते हैं या नहीं. The choice should be which day to go. चुनाव होना चाहिए कि किस तारीख पे जाना है. Like when we're doing books, it's always good to give a choice. जैसे पुस्तक वितरण के समय ये चुनाव देना बहुत अच्छा है. Today we have Bhagavad-gitas for sale. आज हमारे पास भगवत गीता है बेचने के लिए. Would you prefer English or Hindi? तो आप अंग्रेजी में चाहेंगे या हिंदी में? Not do you want a book or not? ये नहीं कि आपको पुस्तक चाहिए या नहीं. Or would you like to read the Bhagavad-gita or Srimad Bhagavatam? कि आप भगवत गीता पढ़ना चाहेंगे या श्रीमद् भागवतम. Not do you want one or not? ऐसा नहीं कि आपको ये चाहिए या नहीं. The choice should be which one they want, not whether they want one or not. चुनाव होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक को चाहते हैं, ये नहीं कि चाहते हैं नहीं चाहते. So remember this with books and the movie. तो आप ये याद रखिए पुस्तक वितरण के समय भी और मूवी के लिए निमंत्रण देते हैं. Taking a book and seeing the movie is important. पुस्तक लेना मूवी देखना इम्पोर्टेंट है. Which book or which time is not important. कौन सी पुस्तक कौन सा समय ये महत्वपूर्ण नहीं है. So remember that in the choices. तो ये चुनाव देते समय याद रखिए. So first find out the places and the times. तो पहले आप ढूंढिए कि कहाँ मूवी लगी है, किस समय लगी है. And then find some of the people you know who maybe weren't interested to come to the temple regularly or become brahmacharis. तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो रुचि रखते हो परंतु ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते. And get them to come with you to the movie. तो उनको अपने साथ मूवी में लाइए. But let them pick which date is more convenient for them.
तो ये पूछिए कि कौन सी डेट ज़्यादा कन्वीनियंट है उनके लिए। Okay, we'll stop there. तो हम यहीं पर विराम देंगे। Who has seen a movie already? आप में से कौन भाग मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं? Who is planning to go again? आप में से कौन प्लान कर रहे हैं दोबारा जाने के लिए? Who can bring some people who have never come to temple before? आप में से कौन Yes. लोग आ सकते हैं जो पहले मंदिर कभी नहीं आए? All you have to do is ask them, come to see the movie with me. आपको सिर्फ इतना करना है कि उनको कहना है कि आप आइए मूवी देखने के साथ। They won't say, oh no, I can't see a movie. They won't say, oh no, I can't see a movie. तो आपको ऐसा होता नहीं मिलेगा, ओ नहीं मैं मूवी नहीं देखता, मूवी नहीं देख सकता। They go to see many silly movies, don't they? तो वैसे आधुनिक जीवन में अलग-अलग मूवी देखने जाते ही हैं। Indian movies were ruined for me. Indian movies were ruined for me. इंडियन जो भारतीय मूवी है, प्रभु जी कह रहे हैं उनके लिए दबाव करने वाली। Because in 1971 I went with Srila Prabhupada to J. Om Prakash's house, the biggest movie producer in India at the time. 1971 में प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के साथ J. Om Prakash. जय ओम प्रकाश के साथ गए थे। उस समय सबसे बड़ा मूवी प्रोड्यूसर था भारत में। He made movies like Hati Merasati. हाथी मेरे साथी मूवी बनाई। But he said, I'll tell you the truth, Indian movies are silly. तो उसने कहा कि मैं आपको सत्य बताता हूँ, भारतीय जो मूवीज हैं बहुत ही मूर्खतापूर्वक बनती हैं। They'll pull the guns and they'll say, we'll kill each other. वो बंदूक निकाल के एक दूसरे से बोलते हैं कि हम तुम्हें मार दूंगा। But first let's have a dance. भारत तो पहले आप नृत्य करते हैं। So after that I never saw any Indian movies. उसके बाद मैंने कभी भी भारतीय मूवी नहीं देखी। Even though the movie people came to see Prabhupada that night, J. Om Prakash, Rajesh Khanna, Devanand, and the four Kapoor brothers all became life members. देवानंद, राजेश खन्ना, चार जो कपूर भाई हैं, वो सारे उस लाइफ मेंबर बनते हैं। So they came to see Prabhupada and I at J. Om Prakash's house. तो वो श्रील प्रभुपाद से मिलने आए थे जय ओम प्रकाश के घर में। But I never went to any of their movies. परंतु मैं उनकी किसी मूवी देखने नहीं गया। I'm sorry if I offended them. क्षमा कर दीजिए अगर मैंने उनके प्रति कोई अपराध किया हो। Any question or comment? किसी का कोई प्रश्न है टिप्पणी? Yes. मैं एक ये भगवद गीता के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। ये अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिले थे आपस में अहमदाबाद में। उस समय फुटेज कोई भी देख सकता है। उस समय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने उस चीन के राष्ट्रपति को भगवद गीता दी प्रेजेंट में और चाइनीज वर्जन के अंदर जो ISKCON के राधा गोविंद टेम्पल है वहां से मंगाई हुई थी। तो उस समय कहता है इस संसार में मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है और इसके सिवाय संसार को कुछ चाहिए भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वो भगवद गीता चीन के राष्ट्रपति ने अपने हाथ से ली थी और आप देखते उस समय हमारा कितना विश्व युद्ध चल रहा था। डोकलाम सभी को पता है और देवदास में भी बड़ी छटपट हुई थी। उस समय मोदी साहब ने कहा था मेरे पास जो कुछ देने को था मैंने दे दिया, अब जो काम करना है उससे करना है, मैंने नहीं करना। What did he say? He said in Ahmedabad when Indian Prime Minister Shri Narendra Modi and Chinese President they met together. Our Indian Prime Minister gifted a copy of Bhagavad-gita in Chinese language of Srila Prabhupada to the President of China. And at that time there was a lot of crisis going on between the two countries. And he said, I have nothing more to give to you. Whatever work will be done, it will be done by this book. That was a comment to it. Yes, that's,
In 1975, there was a book fair in Moscow. 1975 में मॉस्को में एक पुस्तक मेला लगा था। And Gopal Krishna Swami and a few others went to this book fair in Moscow. तो गोपाल कृष्ण महाराज और अन्य कुछ भक्त इस बुक फेयर में गए थे। This was a unique opportunity to present literatures in a communist country. ये बहुत ही दुर्लभ अवसर था कि एक कम्युनिस्ट कंट्री में पुस्तकें प्रस्तुत करने का। There is a picture of one Russian politician reading the Bhagavad Gita they had given him. एक चित्र है जिसमें उसमें रशियन के राजनेता भगवद गीता पढ़ रहे हैं जिनको उनको उपहार में दी थी। This person was Boris Yeltsin. उस व्यक्ति का ये नाम है Boris Yeltsin. बोरिस येल्सिन। And he actually brought down the whole communist system. और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी की पूरी जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको गिरा दिया। So we see how much advantage this literature can do. हम देख सकते हैं कि किस हद तक ये लाभ पहुंचा सकता है एक एक ग्रंथ। And you see, it's so good that it has been translated in so many languages. और सबसे अच्छी बात है कि इसका अनुवाद इतनी सारी भाषाओं में हो चुका है। And now the ruler of China has the Bhagavad Gita. The ruler of China has Bhagavad Gita. और अब जो चाइनीज का जो लीडर है उसके पास भगवद गीता है। And I heard Narendra Modi gave them to other leaders too in other countries. Yes? और मैंने सुना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्य देश के नेताओं को भी ये गिफ्ट की है। So when the right persons get the book, so much change can happen in the world. जब सही व्यक्ति को एक ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो पूरे विश्व में कितना बदलाव आ सकता है। But we don't rely just on the one book. We also have to distribute to many people. परंतु हम एक ही पुस्तक पर रिलाय नहीं करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों को पुस्तक देते हैं। But while we're distributing to many people, we also have to keep the lines open for the important people. और जब हम इतने सारे पुस्तकों लोगों को पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी वितरित करना है। That must be some sign for more preaching in China. तो जो चाइना में है इससे प्रचार बढ़ेगा। Krishna can make miracles happen. कृष्ण चमत्कार कर सकते हैं। Jai, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.